Good morning, student. My name is Shruti Jain, and I'm your faculty of business communication. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. So, in the previous lectures, we have discussed what is PPT and how you can make your PPT. Hope you have gone through your that video lectures. And in today Zoom meeting also we have discussed the main points and your queries related to your PowerPoint presentation. So what is basically we have discussed how you can present your data on a PPT or a transaction wise, or you how you can add transactions and slides to your PPT. Now in this lecture we will be covering in this lecture, we will be covering your sales presentation parts, what basically sales presentation is, and how you can make your how can you can prepare your sales presentation, how you can make it effective. Basically, first of all, you should know the difference between a sales presentation and a marketing presentation. So in your syllabus it is sales presentation. Basically, the difference between sales and marketing you should know. In marketing, we want, what a marketer wants is he wants to sell out his services. So selling is a part of marketing. Now, not everything is included in sales. So sales is just a part of marketing. Marketing is as overall it's a very big terms, and it includes various things. It includes goodwill of the firm, it includes the various methods and the techniques through which a marketer sells its product. But in sales, the main focus of a marketer is to sell out its goods and services to the customer. So हम जब बात करते हैं सेल्स की, सेल्स का मतलब होता है यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट. Basically, you are persuading and you are convincing your customers to buy your product. Like if I'm a marketer, I was working with Byju's. So what the basic work of my what I was I hired, or what basically my job is to sell out the product of Byju's to the customer. I have to convince my customers over the call that you have to purchase my product because they are worth for it. Basically, the main aim of here this marketer is to generate the need among the audience. What we try to do is to generate the needs among the audience. So you should prepare your presentation like this, that you are persuading your audience to buy the product and services. Let's start this lecture. सो सेल्स फनल मॉडल में क्या क्या करते हैं, व्हाट इज द क्वालिटी, यू शुड फोकस ऑन द सबसे मेन जो पॉइंट होता है मार्केटर का काम होता है, ही शुड इन्फेसिस, मतलब मेन फोकस किस पे करना चाहिए, ऑन द क्वालिटी, डेवलप सॉल्यूशन, प्रूफ एंड क्लोज. सबसे पहले ही शुड हाईलाइट द क्वालिटी. ही शुड पहले तो सबसे पहले क्या होता है, ही शुड जनरेट द नीड अमंग द ऑडियंस. Like I was working with Byju's, what I try to do with my audience when I try to call my customer, firstly I try to understand the customer, what he wants, what is the target, what he wants in his life. Next time, next point is to I have to generate the needs among the audience of my product. Not everyone is want my product, or I cannot satisfy everyone in the market, but the main focus of my product or my presentation is to identify my target market. आप देखो सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते. सेम व्हेन वी आर गिविंग यू अ लेक्चर, आई कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बट मेन फोकस ऑफ माई लेक्चर इज टू give my knowledge or give my lecture to those who really want that. सेम ऐसे ही आप एज अ मार्केटर आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस. Next comes to your program objective. First of all, you have to design your objective, define value added selling, and identify ways you can add value to the sales situation. First of all, you have to add value to the product. Like taking that same example, like I was working with Byju's, so I was in a program of selling IES courses to the students. So what I was trying to do that time, I was generating the need among the students of IAS courses. I try to compare the courses that was available for them online basis with my Byju's course. Okay, so first of all, you should add your value. Your presentation should add value to your product. Like, or if I am talking about, like, you are taking an example of Mama Earth. So what they are highlighting, that they are not focusing on the beauty product, or they are not focusing on that their product is focusing on that they
are environment friendly. By purchasing or by selling each product, they are planting the tree. So what they are adding value, they are adding value to the environment. So same ways that your presentation should add value to your product only. So the main USP of your product should be highlighted when you are presenting your presentation. So main focus of your presentation should what, it should highlight why customer will buy your product only. ठीक है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वैल्यू एडेड सेलिंग प्रैक्टिसेस दैट यू वुड लाइक टू यूज योर कस्टमर रिलेशनशिप. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं आपकी आईफोन्स की, व्हाट आईफोन्स आर एडिंग वैल्यू, दे आर एडिंग वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, दे आर एडिंग वैल्यू ऑफ देयर सिस्टम, iOS system, to the customer. And if I am talking about Mama, they are adding value, they are adding value to the environment, that by selling each product they are planting trees. So you should highlight each and every, like Patanjali, they are highlighting that they are Savdeshi product. So each and like अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, आपकी सबवे की बात करते हैं, तो what Subway is highlighting that they are focusing on more on health product. So आपको जो भी मेन टारगेट है, जो मेन हाईलाइट प्रोडक्ट का है, you have to highlight that only. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव में, एनालाइज योर प्रोडक्ट सर्विसेज, डिटरमाइन द व्हाट बेनिफिट दे प्रोवाइड एंड हाउ दे मीट द कस्टमर नीड्स. आपको जितना भी, जब भी आप किसी भी सेल्स प्रोडक्ट में जाते हो, सेल्स प्रेजेंटेशन में जाते हो, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए काम कर रहा है. अगर आप जितना अच्छा आप अपने प्रोडक्ट को जानोगे, उतना अच्छा आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओगे. आइडेंटिफाई एनी ऑब्स्टिकल्स टू क्लोजिंग द सेल्स एंड सिलेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर ओवरकमिंग देम. फॉलो गाइडलाइंस एंड क्लोजिंग फॉर द सेल सक्सेसफुली. सो व्हाट इन दिस स्लाइड व्हाट आई वांट टू से दैट, लाइक बहुत सारे कस्टमर होते हैं, आपकी शॉप है, लाइक आप लोगों की शॉप है, आपको पता होना चाहिए कस्टमर आपको कहाँ पर घेरेगा, आपके पास कहाँ काउंटर क्वेश्चंस आने वाले हैं. यू शुड नो हाउ यू विल बी टैकलिंग दैट, जो काउंटर क्वेश्चंस आएंगे. लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग विद बायोजूस, द क्वेश्चन मोस्टली द क्वेश्चन वी वर आस्क्ड दैट व्हाई वी शुड परचेज योर प्रोडक्ट ओनली. अनअकैडमी भी सेम रेट पर, बल्कि कम रेट पर, आधे रेट पर वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, सेम बुक्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनअकैडमी. सो मुझे पता था मुझे कहाँ कस्टमर गिरेगा, तो आई नीड टू हैव द काउंटर क्वेश्चन फॉर दैट. सो सेम अगर आपके प्रोजेक्ट पे कोई भी सेल है, तो वो कस्टमर कोई भी आपके पास अपने काउंटर क्वेश्चन रेडी होने चाहिए. नेक्स्ट हम डेफिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है, कमोडिटी दैट हैव बीन सोल्ड, स्पेशली द नंबर ऑफ सक्सेसफुल सेल्स दैट हैव बीन मेड. तो ये हमारा सेल्स की आपको डेफिनेशन हमने कवर करी है इसमें. तो आपको क्या डूज एंड डोंट्स यहाँ पे रखने हैं. बी पोलाइट, बहुत ज़्यादा पोलाइट होना है. यू हैव टू बी, इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग अ सेल्स प्रेजेंटेशन, यू हैव टू बी ओवर स्वीट होना पड़ेगा. यू हैव टू बी शुगर कोटेड एवरी टाइम. लाइक अगर आप किसी साड़ी की शॉप पे जाते हो, तो आप क्या देखते हो, वहाँ शॉपकीपर आपको क्या कर रहा होता है, अरे आप मैम आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो शो पहन के, दैट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी एंड यू आर द वन. अगर आप जाते हो, अगर आप किसी पार्टी में जाओगे, तो सिर्फ आप ही देखोगे, यू आर लाइक लुकिंग वेरी स्लिम और लाइक दैट. एंड मतलब ही विल ट्राई टू मेक दैट शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन द अर्थ. सो डोंट बी रूड विद, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पोलाइट रहना है. बी पेशेंट, टारगेट पोटेंशियल क्लाइंट्स को आपको टारगेट करना है. बी ओवर, ये नहीं बहुत ज़्यादा पुशी होना है. लाइक कहीं बार आप जाते हो, तो किसी शॉप वाला बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है आपको, नहीं जी लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, अरे लेके तो देखिए, आप ट्राई तो करके देखिए. नहीं, अगर आपको फिर आप बाहर निकलते कहते हो ये तो बहुत चीप हो जाता है. नहीं, आपको ऐसे नहीं करना. व्हेन यू आर गिविंग योर सेल्स प्रेजेंटेशन, यू हैव टू बी वेरी काम, बहुत कामली. लाइक अगर ठीक है आप लेते हो, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप नहीं लोगे तो आपका दैट इज योर चॉइस, बिकॉज यू कांट फोर्स एनी कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. इफ दे रियली वांट दैट, दे विल बाय दैट इन डेफिनेटली. ठीक है, आपको इम्फेसिस, नेगेटिव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को बहुत इम्फेसिस नहीं करना है. जो इम्फेसिस क्या करना है, गुड क्वालिटी को डिस्कस, इनअप्रोप्रिएट, कोई इनअप्रोप्रिएट टॉपिक डिस्कस नहीं करना है. सो आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो व्हेन इट डज अकर, व्हाट डज यू डोंट एक्सिस्टिंग अकाउंट्स टू कॉम्पिटिटर्स. आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू कंपेयर योर प्रोडक्ट विद योर कॉम्पिटिटर्स. व्हाट यू कैन डू इज स्ट्रेथनिंग योर रिलेशनशिप विद योर एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट. आपको क्या करोगे, आपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके साथ अपने एक वो बताना है, रिलेशनशिप बतानी है.
वैल्यू एडेड सेलिंग टेक्निक्स कैसे कर सकते हो? रेज रिफर टू द एक्सपीरियंस विद अदर ऑर्गेनाइजेशन टू शो योर कस्टमर्स व्हाट यू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड आर क्वालिफाइड टू मीट देयर नीड्स। नेक आप क्या कर सकते हो, कैसे वैल्यू एडेड कर सकते हो? लाइक अगर हम बाय, मैं वही बता रही हूँ वैल्यू एडेड सर्विसेज का क्या कर सकते हो आप। आपके जैसे कि अगर हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कुछ चीज़ सेल कर रहे हो, दैट यू कैन राइट अ रिव्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, तो दैट विल ऐड अ वैल्यू एडेड सर्विसेज टू योर प्रोडक्ट। अगर हम बात कर रहे हैं आपकी कुछ भी चीज़ मैं बेच रही हूँ आपको फेस टू फेस, सो यू कैन ऐसे गिव देम आफ्टर सेल सर्विसेज। आप आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकते हो, दैट after buying that product, if you face any type of issue or if you regret buying that product, please do exchanges. You are having a 15 days return policy that we will give you a cash, or otherwise we can change your product. So these are the value added services that company provide to their customers. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये सब तो चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। इनिशिएट डिस्कशन विद द इनोवेटिव वेज, मतलब बहुत इनोवेटिव वे से आपको डिस्कस करना है, इनोवेटिव वे में अपना प्रोडक्ट को बेचना है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से बेचोगे अपने प्रोडक्ट को, जितना ज़्यादा आप इनिशिएट लोगे, लाइक यू हैव टू सी दैट इफ़ यू, योर कस्टमर इज़ योर किंग। So throughout the presentation you have to feel them or make them feel like they are the only one, and they should be pampered throughout the presentation. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हो? लाइक बायजूस, वाई बायजूस इज हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर एन अकेडमी? लेट मी डिस्कस दैट. Because the Byju's is having this expertise advice, they are having the people working in Byju's, what they are getting paid for their work, what they are doing. So same in an academy, they are not having the a highly qualified staff, because when we are hired we will be go through very the three type of interview, we have to go through three round of interviews. So basically what they are getting, they are getting a cream, जो कहते हैं जिसको cream ले रहे हैं वो, अन अकेडमी क्या कर रहा है, सबको हायर कर रहा है. सो यू हैव टू गेट अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. कैसे कर सकते हो आप? या तो अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, तो या तो बायजूस क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट को इन्हांस कर सकता है, या वो क्या करेगा, डील, बहुत अच्छी अच्छी डील दे सकता है, लाइक क्रेडिट पे दो, चलो आप 5,000, आपका प्रोडक्ट का रेट कितना है, 10,000, आपने 60,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, कोई नहीं, 5,000 आप इनिशियल पेमेंट करो, बाद में हम ईएमआई दे रहे हैं. या तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बना सकते हो, या फिर बहुत अच्छी डील्स प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो. कैसे समझोगे कि आप जब पॉइंट्स, कस्टमर क्या चाहता है, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कस्टमर क्या चाहता है, तब तक आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेकार रहेगी. जितना हो सके आपको अपना प्रोडक्ट को राजा बनाना है और कस्टमर के अंदर नीड जनरेट करनी है. जितनी अच्छी आप नीड जनरेट करोगे, उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट बिकेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्स प्रेजेंटेशन. तो बेसिकली इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव लर्न, दैट यू हैव टू present yourself very calmly, and product is your king. You have to know your customers कौन है, और जितना ज़्यादा कस्टमर को अच्छा समझोगे, उतना ज़्यादा आपकी सेल होगी. Thank you. And if you are having any doubt or any query regarding this lecture, please do ask me in your Zoom meeting. Thank you. Or if you feel any type of burden, or if you feel like these lectures are too short, please do tell me in your Zoom meeting, so that I can increase the length of these lectures. And if you face any type of query, or any type of, if you need any type of notes, please do ask me, so that I can forward it to you. Thank you.